बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के सीईओ हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो सीईओ बनना बंद हो गए थे, 2022 मई से अगर मैं गलत नहीं हूं या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर कर? मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। यह असलियत है सरकार की। एक और असलियत है और उस पर संक्षिप्त में बात करके आपके सवालों का जवाब देंगे हम, और यह असलियत है डेटा ब्रीच की। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए, अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात यह भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है, और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ, श्री चिदंबरम का हुआ, विपक्ष के और लोगों का हुआ, डीएमके के नेताओं का हुआ। लगातार पता चल रहा है कि यह डेटा कैसा लीक हो रहा था। सारा डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। सरकार के जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका डिफेंस क्या है? नहीं नहीं, ये कोविन डेटा लीक नहीं है, ये कोई पहले का डेटा कोविन का लीक हुआ था, उसका ब्रीच हुआ था, वहां से आ रहा है। तो हमारे कुछ सवाल हैं इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे एक थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहां का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? ये पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि यह डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? सो कहीं ना कहीं यह प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से साफ है, अपना काम संभल नहीं रहा है, और जहां पर आपकी कलई उधेड़ी जाएगी वहां पर दमन किया जाएगा। अपना डेटा संभल नहीं रहा है, लेकिन किसानों की असलियत ना बाहर आ जाए, किसान कानून जो बने थे उसकी असलियत ना बाहर आ जाए, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को, किसानों के आंदोलन को दिखाने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए दबाव बनाया गया, और बंद भी हुए। यह दबाव बनाया गया कि कैसे राहुल गांधी जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए और कैसे वो अकाउंट डोरमेंट रहे। 6 महीने तक सब्सक्राइबर ग्रोथ ना होना, आप सोच सकते हैं। और जैसे ही खबर बाहर आने वाली थी, सब्सक्राइबर ग्रोथ लगातार होती गई, उछाले मारने लगी। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र पर प्रहार है, और मीडिया के भी बहुत सारे साथियों को उस पर आपत्ति होती है, तो ज्यादा दूर नहीं देखना है। जैक डॉर्सी का ये 40 सेकंड से कम की जो बाइट है, 40 सेकंड से कम का जो वक्तव्य है, उसी को सुन लीजिए और सारा सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. Twitter has become a platform for expressing public opinion. It is also a platform where news is generated. It is also a platform where common citizens in this country can voice their concerns, their opinions, and what's ailing them. And the founder and former CEO of Twitter, Jack Dorsey, has today
made it evidently clear, and he has nothing to lose or gain here, by the way, before the government jumps in. He asserts that when the farmer agitation was happening in India against the 3 farmer laws, the Modi establishment, the Modi government, pressurized Twitter to block accounts that were showing farmer protests. Otherwise, they would be raided, their employees would be raided, and Twitter would be shut down in India. I wasn't expecting the government to say anything else. There is no other defense other than saying that Dorsey is lying. What does he have to gain through lying or not lying or telling the truth? But the government has a lot to gain through lying. And it all ties up together. It all ties up because if you remember in May 2021, when the farmer agitation was at its peak, the BJP fake news factory and multiple leaders had tweeted a concoction of their brainchild, some alleged toolkit, which was tagged as manipulated media. And Twitter was then raided on the 24th of May 2021. Do you understand why that happened? It happened because the idea was to suppress the farmer agitation. The idea was to send out a message that anybody standing with the farmers or showing their movement will be suppressed like this. But what is the Prime Minister so scared about? And why should the Prime Minister of this country be scared of a girl who's a climate activist at the age of 21? Why should the Prime Minister squirm at the sight of Rihanna or at a statement made by Greta Thunberg or any voice that comes in from alternate media, whether it's Newsclick or Wire or News Laundry or the Quint or any such agency or the Dainik Bhaskar or the Bharat Samachar, anybody exposing the government and asking uncomfortable questions will be raided, will be humiliated, and will be pressurized into submission. And last but not the least, it is evidently clear that opposition voices are regularly suppressed at the behest of the Modi government. If you remember, in August 2021, the Twitter account of Shri Rahul Gandhi ji was blocked. And from August 2021 to February 2022, for a period of 6 months, there was no subscriber growth in his account. It was only when the Wall Street Journal wrote to Twitter that they were going to do a story about the account suspension and the dormancy in growth of subscribers, is suddenly when that shadow ban was lifted and his subscribers saw multiple times more growth. Why should I not say today that this happened at the behest of the Modi government? Why should I not say that the Modi government got this done? And they also hashed a conspiracy because Mr. Gandhi, after walking 4,000 kilometers in this country, was showing the government a mirror. They hashed a conspiracy to oust him from parliament. But this manipulation of social media platforms or media at large is what ails Indian democracy. The mother of democracy is seeing a murder of democracy in broad daylight, and people are being coaxed into submission. And that is what weakening of democracy is. I will also very briefly speak about the data breach that has happened in CoWIN. The most feeble response from the government was, but the most bizarre, which has actually opened up Pandora's box. The Minister of State for Technology and Information and Technology and Electronics has come on record to say that this breach is to a previous data breach and stolen data. Telegram bots are giving out sensitive information because you had registered sensitive information on the CoWIN app. Data for Mr. Chidambaram, for Ms. Kanimori, for KTR, for various opposition leaders, Derek O'Brien, everybody's data has been found online. And guess what? The data of R.S. Sharma, who vouched for the safety of the CoWIN app, is also found there along with his passport number. And the government's defense is that this is a previous breach. Did you report the previous breach? When did the previous breach happen? Do we know who's using this data? What is this being used for? How did a third party get access to this? Each time you lie, you open a Pandora's box. So the reality is that you cannot keep the data of crores of Indians safe, but you want to point fingers, you want to coax platforms into submission because they show you the truth. But the reality also is that all platforms, each and every platform of this country available to us will be used to show you the mirror of exposing you, of telling the truth. And come what may. We are willing to pay any price for this. But what has happened is that 140 crore Indians
today feel embarrassed, today feel ashamed that an elected government, a prime minister so rattled by the truth, tells a social media platform to not show the farmer agitation. एक दो नहीं 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है। और अगर सतपाल मलिक की माने तो उन्होंने मोदी जी से कहा यह बंद करवाइए, और उन्होंने पलट के कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़े ही मर रहे हैं। आपने किसानों को जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। 700 से ज्यादा किसानों का खून आपके मत्थे है, और आप पलट के ट्विटर को बोल रहे हैं कि इनको मत दिखाओ, और अगर दिखाया तो हम आपके ऊपर रेड करेंगे। और सरकार का डिफेंस यह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं। आज सारी दुनिया जानती है कि झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। We'll first take questions on suo motu, please. First and foremost, we demand that the government, we also demand that the government stops suppressing social media platforms. The government stops suppressing, coaxing large sections of media into submission. What we saw recently in Amethi, Smriti Irani threatening a journalist to call up his owner, and within hours his job was lost. This has to stop. Intimidation of media, intimidating journalists, intimidating social media platforms has to immediately stop. And as far as data breach is concerned, the government will have to tell the truth. How is data being breached? To what extent has the data breach happened? How was the government silent when, according to them, a previous data was stolen and breached? It is quite clear that CoWIN data did breach, whether now or previously. Telegram bots have access to it. Who's using this data? The government has to come out with the truth. हमारी मांग पूरी तरह से यह है कि सरकार को डराना, धमकाना बंद कर देना चाहिए। हर उस आवाज का दमन बंद कर देना होगा जो आपको सच का आईना दिखाता है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में दंभ और अहंकार में चूर्ण स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को धमकाया कि मैं तुम्हारे मालिक को फोन कर दूंगी, और एक बार नहीं 10 बार कहा, और कुछ ही घंटे में उस आदमी की नौकरी खा गई। ये बंद करना होगा, क्योंकि किसानों की असलियत आपका मीडिया नहीं दिखा रहा था, अधिकांश मीडिया, और वो सोशल मीडिया पर दिख रही थी। आपको बंद करना होगा सोशल मीडिया को डराना, धमकाना, सेंसर करना। और जहां तक डेटा ब्रीच की बात है, सरकार को सच बताना पड़ेगा। ये डेटा ब्रीच कैसे हुआ, पुराना डेटा ब्रीच कैसे हुआ, उसके बारे में आपने क्या किया, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अगर डेटा की उपयोगिता खत्म हो गई है तो उसको डिलीट क्यों नहीं किया जा रहा है? टेलीग्राम जैसे बॉट्स के पास ये डेटा कैसे पहुंचा? क्या सुनिश्चित किया जा रहा है डेटा की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए? Any other questions on this? This is perhaps happening with you also. So don't think this is happening to somebody else or to some other accounts. If your accounts are being suppressed, and मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक कारण ये भी है, और मैं ये किसी अहंकार से नहीं बोल रही हूं, लेकिन इसका कारण ये भी है कि लोगों ने इनकी बात मानना बंद कर दिया है, इनकी बात सुनना बंद कर दिया है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं 300-400 लोग इनको यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों के। आज ट्विटर की ही बात कर लीजिए, हमारे कोई भी ट्वीट उठा लीजिए, चाहे वो लास्ट 30 ट्वीट हो, चाहे लास्ट 50 हो, लास्ट 100 हो, लास्ट 1000 हो। आईएनसी की ट्वीट का इंप्रेशन 45 लाख है, वहां पर भाजपा की ट्वीट का इंप्रेशन 5 लाख है। हम अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक बात है, लेकिन यह भी सच है कि हम सच दिखा रहे हैं और लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि ये दमन कर कर, इस अहंकार से आप अपनी बात मनवा लीजिएगा, इस मुगालते में जिए। Any other questions on this data breach or what is happening to social media platforms? Okay, thank you very much. I hope you will carry this because this pertains to you and your community also.